जुडिशियल क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्री के लिए मैं एविडेंस के 500 MCQ आपको सॉल्व कराने वाला हूं इस वीडियो के अंतर्गत। तो इस वीडियो के अंतर्गत नहीं, इस वीडियो सीरीज़ के अंतर्गत, क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि 500 क्वेश्चन एक ही वीडियो में कोई सॉल्व करा दे, इसलिए 25-25 प्रश्नों के एक एक सेट मैंने तैयार किए हुए हैं और इस तरीके से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके मैं सारे 500 क्वेश्चन कराऊंगा। अब ऊपर आपने देखा होगा कि ये ब्रह्मास्त्र वीडियो के नाम से मैंने इसे थंबनेल बनाया हुआ। वो कारण ये है कि ये 500 क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, ये सिर्फ 500 क्वेश्चन नहीं होंगे, बल्कि इस प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत आपको एक एक क्वेश्चन से जो रिलेटेड क्वेश्चन बन सकेंगे, रिलेटेड फैक्ट जो है उसको भी हम जानेंगे, उसको भी हम समझेंगे। तो इसलिए 500 क्वेश्चन 2000 क्वेश्चन में कब बदल जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। और इतना ही नहीं, बल्कि आपको ये क्वेश्चन बेयर एक्ट ले के सॉल्व करना है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी डेवलप होता रहे, आप उस चीज़ों को देख सकें और मेरी गलतियों को पकड़ सकें। और अगर आपने ऐसा किया तो नो डाउट प्री में कोई नहीं रोकेगा आपको। प्री के लिए ये पढ़ लीजिए, जो ये वीडियो है ये सारी देख लीजिए और इसमें जितने भी क्वेश्चन है सॉल्व करिए, उससे रिलेटेड फैक्ट को ध्यान से सुनिए और बेयर एक्ट लेके सॉल्व करिए। आपका कहीं किसी भी स्टेट का प्री नहीं रुकने वाला। तो सिर्फ एविडेंस का सॉल्व करने से ऐसा नहीं होगा, हाँ एविडेंस से संबंधित जो प्रश्न आएंगे उनको आप सॉल्व कर पाएंगे। इसी तरीके से अन्य सब्जेक्ट की भी वीडियो मैं आप लोगों को उपलब्ध कराता रहूँगा क्रमशः, और सारे सब्जेक्ट के मैं करा दूंगा जितना भी जुडिशरी के सिलेबस में है, एपीयू के सिलेबस में है। तो चलिए देर नहीं करते हैं और क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं फिर। The first question is, which of the following section of Evidence Act recognize the principle that hearsay evidence is no evidence? Option A, Section 60, B, Section 64, C, Section 91, and D, Section 92. So the answer is option A, Section 60. The next question is, Chapter 5 of the Indian Evidence Act 1872 deals with option A, oral evidence, B, documentary evidence, C, burden of proof, and D, witnesses. So the answer is B. Section 62 of the Evidence Act 1872 deals with option A, primary evidence, B, secondary evidence, C, burden of proof of documents by primary evidence, and D, cases in which secondary evidence relating to documents may be given. So the answer is option A. Which one of the following sections relates to secondary evidences? Option A, Section 60, B, Section 80, C, Section 63, D, Section 62. The answer is option C. Which section of the Indian Evidence Act provides that contents of the document must be proved by primary evidence? Option A, Section 61, B, Section 62, C, Section 63, D, Section 64. The answer is option D. Which one of the following sections of the Indian Evidence Act provides for admissibility of secondary evidence? Option A, Section 60, B, 61, C, 63, D, 65. The answer is option D. In which of the provisions of Evidence Act special provision as to evidence relating to electronic record was added? Option A, Section 65A and 65B, B, Section 64, C, Section 86, D, Section 116. The answer is option A. In which section of Indian Evidence Act special provision is mentioned regarding evidence relating the electronic record? Option A, under Section 59, B, under Section 63, C, under Section 65A, and D, under Section 67A. So the answer is option C. Under which of the following section of the Indian Evidence Act the contents of electronic records may be proved?
Option A, Section 65A, B, Section 65B, C, Section 66, and D, Section 67. The answer is option B. This presumption that a computer output shall be taken to have been produced by computer is contained in option A, Section 65A, B, Section 65B, Clause 2, C, Section 65B, Clause 5, Subclause C, and D, Section 67A. So the answer is option C. Under subsection 5 in Indian Evidence Act, a computer output shall be taken to have been produced by a computer. Option A, whether it was produced by directly. B, whether it was produced by means of any appropriate equipment. C, whether it was produced by directly or with human intervention by means of any appropriate equipment. And D, whether it was produced by directly or by means of any appropriate equipment. So the answer is option C. In the Evidence Act, the conditions in respect of computer output to be deemed admissible in evidence as document is contained in option A, Section 65B, Clause 4, B, Section 65B, Clause 1, C, Section 62B, Clause 2, and D, Section 65B, Clause 5. So the answer is option C. Under Indian Evidence Act, the provision of proof relating to electronic signatures is contained in option A, Section 67A, B, 67B, C, 68A, D, 68B. So the answer is option A. If the attested witness denies or does not recollect the execution of the documents, its execution may be proved by other evidence under option A, 68, B, Section 69, C, Section 70, and D, Section 71 of Indian Evidence Act 1872. So the answer is option D. Which of the following section defines public documents? Option A, Section 34, B, Section 35, C, Section 74, and D, Section 78. So the answer is Section 74. Section 75 of the Indian Evidence Act 1872 deals with option A, public documents, B, private documents, C, certified copies of public documents, D, proof of other official documents. So the answer is option B. The procedure for getting certified copy of a public document is set forth in Evidence Act under option A, Section 75, B, 76, C, 77, and D, 78. So the answer is option B. Under which section of the Evidence Act provisions for presumption as to gazettes in electronic forms has been made? Option A, Section 81A, B, 85A, C, 85B, and D, 88A. So the answer is option A. Section 81A was added in the Indian Evidence Act by the Information Technology Act 2000 to provide the presumption as to option A, electronic agreements, B, electronic messages, C, electronic records, and D, gazettes in electronic forms. So the answer is option D. Which one of the following section of the Indian Evidence Act 1872 is related to presumption as to electronic agreement? Option A, Section 81A, B, 85C, C, 88A, D, 85A. So the answer is option D. The Evidence Act provides presumption as to electronic records and electronic signature. Option A, Section 85B, B, 85C, C, 88A, D, 85A. So the answer is
Option A. Match list first with list second and select the correct answer using the codes given below the list. So the answer is option C. The provision relating to presumption as to telegraphic message is embodied in the Evidence Act wide. Option A, Section 83, B, Section 85, C, Section 87, D, Section 88. So the answer is option D. Which provision of the Evidence Act relates to presumption as to documents 30 years old, ancient documents? Option A, Section 89, B, Section 90, C, Section 90A, and D, Section 91. So the answer is option B. In which year the electronic evidence was incorporated in the Indian Evidence Act as a part of documentary evidence? Option A, 2001, B, 2002, C, 2000, and D, 1999. So the answer is option C. Written document must be proved by writing only. This maxim has been incorporated under which of the following section of Indian Evidence Act 1872? Option A, Section 87, B, Section 91, C, Section 121, and D, none of the above. The answer is option B. Section 91 of the Evidence Act permits admission of oral evidence to prove contents of a document where the writing is a fact in issue. Option B prohibits admission of oral evidence to prove the contents of a document where the writing is a fact in issue. Option C prohibits admission of oral evidence to prove the contents of a document where the writing is not a fact in issue and is merely a collateral memorandum. And D, both B and C. So here the answer is option B. Oral evidence of fact invalidating the document is admissible under option A, Proviso 1 to Section 92 of the Evidence Act, B, Provision 2 to Section 92 of the Evidence Act, C, Proviso 4 to Section 92 of the Evidence Act, D, Proviso 6 to Section 92 of the Evidence Act. So the answer is option A. Thank you. और जैसा कि आप जानते हैं कि 5 सितंबर को टीचर्स डे है और हर बार 5 सितंबर को टीचर्स डे ही रहता है। तो इस बार 5 सितंबर 2022 को शाम को 6 बजे टीचर्स डे सेलिब्रेशन हो रहा है। आप भी उस टीचर्स डे सेलिब्रेशन का हिस्सा हो सकते हैं। बस आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगी और उस लिंक से अपने आप को रजिस्टर्ड कर लेना है, मतलब अपडेट कर लेना है कि जब भी वो कार्यक्रम होगा शाम को 6 बजे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और अगर नोटिफिकेशन ना भी मिले तो उस लिंक के माध्यम से आप उस चीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं, उस कार्यक्रम को ज्वाइन कर सकते हैं। निसंदेह आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अनअकैडमी की तरफ से एक अपडेट आपके लिए और है कि जो भी स्टूडेंट छत्तीसगढ़ और यूपी जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऐसे स्टूडेंट के लिए छत्तीसगढ़ और यूपी प्रीलिम्स के लिए 3 मंथ का एक क्रैश कोर्स चल रहा है। और इस क्रैश कोर्स को आनंद मिश्रा सर, सिद्धार्थ दुबे सर, अर्चना सुखीजा मैम, संदीप खत्री सर और मैं और आशा तिवारी मैम मिल के चलाएँगे। इस बैच में आपको इनरोल करने के लिए एक कोड यूज़ करना होगा और उस कोड को कहते हैं RAILAW10। इस कोड को अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट हो जाएगा जो भी फीस स्ट्रक्चर होगा। और आप जैसा कि जानते भी होंगे कि यहाँ पर 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ, 24 मंथ सारे ऑप्शन उपलब्ध होते हैं। उसमें से कोई भी ऑप्शन चुना जा सकता है।